आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम हमारा कौन सा है, HVAC प्लांट। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वाला वीडियो अपलोड हो हमारे इस चैनल पर तो सबसे पहले उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, मतलब उसका आपकी जानकारी मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर, करेक्ट ऑप्शन 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ADP, करेक्ट ऑप्शन apparatus ड्यू पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which design data is used for indoor air in summer air conditioning, correct option 24 degree Celsius plus minus 1 degree Celsius and 50% RH. Next question, which atmospheric standard year is used in calculating air velocity, correct option 21 degree Celsius and 760 mm. Next question, which types of heat are considered for occupants heat gain in AC space, correct option sensible and latent heat. Next question, what is the minimum quantity of fresh air needed per person in comfort AC, correct option 5.75 CFM. Next question, how the reciprocal of air density is mentioned in psychometric chart, correct option specific volume per unit mass. Next question, which is expressed in the scale marked along x, correct option एंथैल्पी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो किसका है ये क्लियर वाला डायग्राम, एंथैल्पी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which instrument is used to measure the velocity pressure of air in ducting system, correct option pitot tube. Next question, which instrument measures the humidity of air, correct option hygrometer. Next question, which psychometric process takes place if the air is passed through hygroscopic chemicals, correct option heating and dehumidification. Next question, which process increases the specific humidity of air at constant dry bulb temperature, correct option humidification of air. Next question, which process decreases the dry bulb temperature of air at constant specific humidity, correct option sensible cooling of air. Next question, what is the name of part marked as X in a fan coil unit, correct option fan scroll। ये जो X दिख रहा है उसका नाम क्या है, फैन स्क्रॉल। आप थोड़ा और क्लियर कर देते हैं तो ये हमारा कौन सा है, फैन स्क्रॉल उसको बोला जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो डिलीवर्ड इन अ सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर, करेक्ट ऑप्शन परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज X इन अ फैन मोटर, करेक्ट ऑप्शन ऑयल कप। ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है उसका नाम क्या है, ऑयल कप। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, what is the name of part mark as X in the centrifugal switch, correct option contact points। तो ये इसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which property is considered for a temperature range is in selecting a lubricant oil, correct option viscosity। Next question, what is the name of part mark as X in belt driven, correct option bearings। देख लेते हैं ये बियरिंग्स दिखते कहाँ पर हैं, तो बियरिंग्स यहाँ पर X के रूप में आपको दिख रहे हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज X इन AHU, करेक्ट ऑप्शन कूलिंग कोयल। ये जो X पार्ट दिख रहा है इसका नाम क्या है, कूलिंग कोयल इसको बोला जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, which device controls the air flow in ducting system, correct option damper। Next question, what is phenotherm, correct option an insulation material। what is the type of bearing, correct option spherical roller bearing। अब देख लेते हैं spherical roller bearing, तो ये है हमारा spherical roller bearings। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the wet bulb temperature of air if dry bulb temperature is 35 degree Celsius and wet bulb diffraction is 4 degree Celsius, correct option 31 degree Celsius। Next question, what is the dew point diffraction of air if dry bulb and dew point temperature are 36 degree Celsius and 32 degree respectively, correct option 4 degree Celsius। Next question, which parameter of air is measured by the thermometer bulb that is weighted in sling psychrometer, correct option wet bulb temperature। Next question, which temperature is measured first in sling
psychrometer after overhauling? Correct option, wet bulb temperature of air. Next question, which compressor capacity is suitable for 2TR air conditioner? Correct option, 600 kilocalorie per hour. Next question, how many parameters are needed to locate all properties of moist air in psychrometric chart? Correct option, 2. Next question, which temperature are marked on 100% RH curve? Correct option, wet bulb and dew point. Next question, what is measured by anemometer? Correct option, velocity of air. Next question, which psychrometer uses battery operated small fan? Correct option, aspirating psychrometer. Next question, which psychrometric process are represented between initial T1 and final T2 conditions of air in the chart? Correct option, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट वाला ऑप्शन, मतलब ये क्लियर वाला उसका डायग्राम है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the velocity pressure of air in a duct if the total pressure and static pressure are known? Correct option, difference in static and total pressures. Next question, what is measured by manometer in duct air? Correct option, static pressure इसका करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं इसका क्लियर वाला डायग्राम। तो ये हमारा है क्लियर वाला डायग्राम। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? What is the volume of air passed at outlet of a rectangular duct whose area of cross section is 1 meter square and the air velocity by an anemometer is 10 meter per minute? Correct option, 10 meter cube. Next question, how the power consumed by the motor varies with its speed in VFD? Cube VFD. Correct option, cube of its speed. Next question, which parameter of power supply determines the speed of induction motor? Correct option, frequency. Next question, which type of load consumes more energy in AC plant system? Correct option, heating and cooling. Next question, what is the purpose of part mark as X in thermostat? Correct option, switching snaps on. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which part of electronic filter removes tobacco smoke and odors? Correct option, charcoal filter. Next question, what is the purpose of air filter? Correct option, ensure clean air. Next question, how the space between the false ceiling and the building main ceiling is used in handling of air in central AC plant? Correct option, return air duct. Next question, which system maintains indoor air quality by adding fresh air and conditioned air of offset heating or cooling loads? Correct option, air distribution system. Next question, which fan is used to handle the direction of air flow 90 degree away from the inlet? Correct option, centrifugal blower fan. Next question, why the capacitor is tested inside a box or case? Correct option, explodes safely. Next question, why the AHU outlet is connected to supply duct with canvas material? Correct option, avoid vibration of air transmission. Next question, why the crankcase heater is energized for compressor during the shutdown period of AC plant? Correct option, prevent oil forming on the starting compressor. Next question,